स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश बाल भारती 2.3 द वर्म इस लेसन का इंग्लिश वर्कशॉप देखने वाले हैं। तो इस लेसन के हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द पोएम अलाउड एंड यू विल फाइंड सम ओल्ड आउटडेटेड वर्ड दैट वी डू नॉट यूज इन एवरीडे लैंग्वेज नाउ। पोयम रीड करके उसमें से आपको आउटडेटेड वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो हम एवरीडे लाइफ में अभी यूज नहीं करते हैं। However, some writers or poets use them in impart and old-fashioned flowers to suit the background of their write-up. Such words are called archaic word. Give the modern word for the archaic word from the poem. Answer है फर्स्ट वन है थाई यूअर, उसका मॉडर्न वर्ड है यूअर। बीइंग एग्जिस्टेंस, बेस्ट आउट गिवन, थी यू, थॉ यू, मस्ट कैन नॉट। रीड एनी पोयम और सोनेट बाय विलियम्स शेक्सपियर, पिक आउट archaic word and guess what they mean. विलियम शेक्सपियर की पोयम रीड करके उसमें से आपको आर्काइक वर्ड फाइंड आउट करने हैं और गेस करना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन 2 है, द पोएट यूज अ डिवाइस वेयर ही डायरेक्टली एड्रेसेस समवन एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट। Such a device is the figure of speech called apostrophe. For example, turn, turn, thigh, hasty foot aside. Pick out any two other lines from the poem that contain an apostrophe. Answer, the frame thigh, scornful looks, deride, the life thou canst not give. Question 3 है, think and answer in your own words in your notebook. आपको सोचकर इस क्वेश्चन का आंसर राइट करना है आपके नोटबुक में। ए क्वेश्चन, why does the poet appeal to us to respect the life of a worm? Answer, the poet appealed to us to respect the life of a worm as it is also a creature created by God. God has showered his love on it. It is poor, humble, and helpless yet. It is on this earth for a purpose. B है, why do you think God created worms? What is their ecological importance? Answer, God created worms just like other creatures. The sun, moon and the stars are powerful, but God's creation the worm to help in ecological balance. Worms have great importance in ecology. They are a part of a food web and provide food for other creatures. They help the soil to remain clean and fertile. They are nature's recyclers. Question C है, live and let live is a famous proverb. Which lines from the poem support this proverb? Live and let live ये फेमस प्रोवर्ब है, इसको सपोर्ट करे ऐसी पोएम के लाइन्स हमें राइट करनी है। आंसर है, लाइन्स दैट सपोर्ट दिस प्रोवर्ब आर, ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ थू canst not give. D है, does the poem argue us to protect only worms? पोयम में सिर्फ हमें वर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्ग्यू किया है क्या? What is the general message conveyed through this poem? इस पोयम में से जनरल मैसेज क्या कन्वे हो रहा है? आंसर, the poem argues us to protect all the tiny creature on the earth and not only the worms. The general message conveyed through this poem is that all creatures
have been created by God with a purpose. The way our Lord loves us in the same way He loves the other creature. He loves this tiny creature. We should respect them and not kill them. Question number 4 है Find from the library or internet other poems composed in tiny living creature. आप लाइब्रेरी से नहीं तो इंटरनेट से ऐसी पोएम कंपोज करो जो लिविंग क्रिएचर पे है. Try to understand the message in each of them. और उसमें क्या मैसेज दिया है ये अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर लो. सो आंसर है द लैम्ब बाय विलियम ब्लेक. मैसेज है praise for specific qualities given to it by God. That reveals that God has filled the lamb with all positive qualities. The poet phrases his meek, giving, loving personality. Question 5 है Even small things in nature play a big role, so protect nature. Small things भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है. फ्रेम सम स्लैगॉन्स बेस्ड ऑन द अबाउट टॉपिक. अबाउट टॉपिक पे हमें कुछ स्लैगॉन्स फ्रेम करने हैं. तो आंसर है स्लोगन्स है वर्म्स इन सेव आर गॉड्स क्रिएचर, सेव देम सेव नेचर, नेचर सेव अस, वी टू मस्ट सेव इट. क्वेश्चन नंबर 5 है ड्राफ्ट अ शॉर्ट स्पीच ऑन द अबाउट टॉपिक which you could give at your school assembly. Use the following steps while drafting. आपको ड्राफ्टिंग करते टाइम ये फॉलोइंग स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. सो उसमें फर्स्ट स्टेप है ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, बॉडी ऑफ द स्पीच, कंक्लूजन, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ द ऑडियंस. आंसर है गुड मॉर्निंग, respected principal, sir or madam, respected teachers and my dear friends. I Raj of class 10. I here to give a speech on nature, how every small little things plays a big role. Our nature has been protecting and satisfying us in all aspects. But what are we doing to perfect it? We have been and still are playing the lives of the creature of God. Still many of us are not aware of the hazards we may face due to the extinction of the small tiny creature on earth. The environment is a natural world in which plants, humans, beings, animals live. Each component is an important part of ecological balance. The balanced ecosystem will provide a healthy and peaceful life for all of us. I request all of you to respect the creature on this planet, whether big or small. To conclude, I would like to say we are the future and we must take a responsibility to save nature. Thank you. Question 6 है Paraphrase the poem in your own simple language. Write it down in your notebook. जो पोयम दी गई है उसको पैराफ्रेज करना है सिंपल लैंग्वेज में और नोटबुक में राइट करना है. आंसर है द वर्म. उसमें फर्स्ट स्टैंजा में दिया है द पोएट सेज दैट वी डोंट केयर अबाउट द टाइनी वर्म्स. वी एट टाइम्स क्रश these tiny helpless worms. So he asks us to be careful. We look at them with scorn, but the form that is given to them is by God. In the second stanza, the Lord who created us created this tiny worm and has bestowed upon it affection and boundless love. Third stanza है God created the sun, the moon and the stars for all his creature.
He spread the grass over the earth for the comfort of all, and this grass also for the tiny worms. The poet urges us and tells us to allow the worm to enjoy their lives. As they get only a few days to live, we do not have any right to take away their lives and we cannot give them back their life. क्वेश्चन 7 है फ्रेम अ पॉइंट वाइज एनालिसिस ऑफ द पोयम द वर्म यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे दिए गए जो पॉइंट है वो पॉइंट यूज करके हमें पोयम को पॉइंट वाइज एनालिसिस करना है। आंसर पोयम एंड पोएट। द पोएम द वर्म हैज बीन रिटन बाय द फेमस पोएट थॉमस गिसबोर्न। बी है थीम। थीम क्या है पोयम की? द पोएट टेल्स अस दैट वर्म्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in our human existence. God has created them with a specific purpose. We humans at times don't care about this tiny creature, sometimes knowingly or unknowingly kill them. The poet urges us that this small, neglected, helpless creature should be protected. God has showered His boundless love on them. We do not have any right to take the lives of this creature as we cannot give it back to them. उसमें सी है टोन। The poet uses a meditative tone in this poem. D है structure and stanza. There are 4 stanzas in the poem of regular length. The structure of the poem has the 4 quatrains. E है rhyme scheme. A B rhyme scheme है। Language and imaginary. The poet has used Arabic word to impart an old-fashioned flow to the poem. The visual imaginary created by the poem gives a beautiful description of the worm, helpless worm, poor worm. Figure of speech है apostrophe, turn, thigh hasty food aside. Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel, press the bell icon, like करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।